अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग जो है पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करने वाले हैं जैसा मैंने बताया था। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चंस। ये वाले कुछ क्वेश्चंस करने के बाद व्हाट विल हैपन इसके यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ कि क्वाड्रेटिक में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं पास्ट पेपर में, एंड दिस विल गिव यू अ डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस। ओके, तो ये पहला सवाल हमारे पास है। दिस इज फ्रॉम, इफ यू कैन सी, 2005 से लिया हुआ है, जून 2005, एंड लेट्स टेक अ लुक एट इट एट ईच स्टेप। तो और इसके साथ में हमने आंसर्स भी रखे हुए हैं इधर, ये हमारे पास आंसर्स भी हैं। तो इस तरह से हम काम करते हुए जाएंगे एंड अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 क्वेश्चंस करेंगे आज। दैट विल गिव यू द एंटायर रेंज एंड वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू कैन सी ऑन दीज। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड विद द फर्स्ट वन। सो वी हैव, as you can see, it says in the first line, it says for question 3, it says the equation of the curve is given this. So this is basically the equation, and first part में पूछ क्या रहा है, let's come down here. So first part is all about, let me zoom in a bit. So this is a 3-mark question. As you can see, this is a 3-mark question. The first part asks, show that whole of the curve lies above the x-axis. ये बहुत ही आसान है। अब इसमें थोड़ा सा स्केचिंग का आइडिया भी अगर आपको है तो फिर तो आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने बताया था यूनिवर्सल अप्रोच क्या होती है स्केचिंग के लिए कि आप टर्निंग पॉइंट निकालो। टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, सबसे पहले इफ आई कैन फाइंड आउट h इक्वल्स माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a, दिस इज द थिंग दैट विल गिव यू एन एंटायर आइडिया ऑफ वेयर द कर्व इज। ठीक है, सो मुझे क्या चाहिए होगा, मेरे पास ओपन यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म होनी चाहिए क्वाड्रेटिक की, जिसके थ्रू मुझे नजर आ रहा हो कि a की वैल्यू इज 1 and b की वैल्यू इज -3। वी स्टिल डोंट नीड द 4, यानी कि c की वैल्यू भी मुझे चाहिए नहीं। वी विल डायरेक्टली पुट इट इनटू द फॉर्मूला। मैं h कंप्यूट कर रहा हूँ तो h मेरे पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स and 1। सो व्हाट डू वी हैव, वी हैव अ 3/2। ठीक हो गया। अब इस 3/2 को क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन एक्चुअली सब्स्टिट्यूट इट बैक इनटू द इक्वेशन, बिकॉज देखो जब हम h निकालते हैं तो h कॉमा के ये टर्निंग पॉइंट है। अभी अभी आपने जो निकाला वो x है, इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए होगा तो वापस से इसको इक्वेशन में रख देंगे। तो जो मेरे पास 1.5 निकला है, यानी इसको मैं x की जगह पे इधर सब्स्टिट्यूट करके कंप्यूट कर लूंगा। ठीक है, आपको कंप्यूट ना करना पड़े, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। वेयर इज द कैलकुलेटर, ओके हियर इज। सो हम कंप्यूट कर लेते हैं, इसको इधर रख लेते हैं। सो व्हाट आर वी बेसिकली डूइंग, हम इसको कंप्यूट करने वाले हैं इक्वेशन में पुट करके। सो इक्वेशन इज 1.5 squared, okay, and then we have -3, 1.5 and then +4. So answer is 1.75 as you can see. तो मैं 1.75 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट कंप्लीट हो गया। So what is the turning point? Turning point is 1.5 and 1.75. इसका मतलब ये हो गया कि एक तो x स्क्वायर के साथ ये प्लस का निशान आप देख रहे हो, राइट। प्लस का मतलब मैंने क्या बताया था, इफ a is positive then positive people are स्माइलिंग। तो ये कर्व कुछ इस तरह का बनने वाला है दैट इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 1.5 पे, और जो मिनिमम ये टर्न करेगा y की वैल्यू 1.75 से नीचे नहीं जाएगा। यानी अगर मैं x एक्सिस के ऊपर स्केचेस का लूं तो 1.5 पे लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी। ठीक है, और ये जो 1.75 है समझो ग्राफ के ऊपर यहाँ पे से इस तरह से 1.75 से टर्न कर जाता है और इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर इट, स्माइलिंग कर्व है। Okay, so there are no x-intercepts, as you can see from the sketch ही हमें समझ में आ गया कि यार ये इससे नीचे तो जाने नहीं वाला। ठीक हो गया कि ये इससे x एक्सिस से नीचे तो जाने ही नहीं वाला। तो या तो आप पेपर में इस तरह का एक स्केच बना दो एंड उसके नीचे लिख दो कि hence shown that it's not going to go below the x axis, it is always above the x axis, या फिर आप दो स्टेप्स में वर्किंग करो। नंबर 1, the first step would be that you know that just because you know that the coefficient of x square is positive, so आप कहोगे positive a, that means it's a minimum curve। ठीक है, उसके बाद what you can do is you can just find out the minimum value and then you can say okay, so what was the minimum value? minimum value के लिए जाहिर सी बात है पहले h निकालेंगे। h आपके पास आ गया था 1.5 and 1.5 के बाद आपने k निकाला था 1.75, and this is a proof enough that the curve is above the x-axis. Why? Because it's a minimum curve, and अगर minimum ही 1.75 है तो that means it's never going to cross। तो ये थोड़ा सा वही वाली बात जाती है, बट एक और तरीका है। अगर देखो ये ग्राफ x-axis को क्रॉस नहीं करता, मतलब कि
अगर इसमें मैं y की जगह 0 रखूं तो कोई इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट के सॉल्यूशंस नहीं निकलते। इसको बगैर सॉल्व किए हम कैसे शो कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट जो हमने नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ा था एग्जैक्टली वही अप्लाई करेंगे बस। तो मैं d की वैल्यू निकाल के दिखा सकता हूँ। d क्या होता है? b स्क्वायर्ड माइनस 4ac में लिख देता हूँ। लेट्स कंप्यूट इट। माइनस 3 होल थिंग स्क्वायर्ड माइनस 4a इज 1 एंड c इज 4। तो हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया 9 minus 16 which is minus 7. Now this minus tells you that graph is either always positive or always negative, but in this case as we know it is a minimum and it does not have the x-intercept, so it will always be above the x-axis. It will always be positive, always positive. ठीक है, सो ये सारी चीजें हो सकती, तो आप इनमें से कुछ भी शो कर देना। दिस इज जस्ट 3 मार्क क्वेश्चन, तो आपको मिल जाएगा। पार्ट 2 पे चलते हैं जल्दी से। सो पार्ट 2 हैव नीचे ऑलरेडी सेट इट अप फॉर यू। सो पार्ट 2 इज अबाउट फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस कर्व। अब ये वही वाली इक्वेशन है, बस उस एक्सप्रेशन को उठा के बोल रहा है कि भाई बताओ कि ये जो है डिक्रीजिंग फंक्शन कहां से कहां तक है। तो क्या पूछ रहे हैं? अगेन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है। सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब होता है एक्स की रेंज, लिमिट, जिसको हम कहते हैं ना, जैसे एक्स कहां से कहां तक होगा, लाइक कहां से कहां तक होगा, या आसान लफ्जों में आप एक्स एक्सिस का बताना चाह रहे हो कि फ्रॉम ए टू बी कहां तक यानी कि है। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ वैल्यूज, यानी जिसको हम यूजुअली लिमिट्स में इनइक्वालिटीज में करके लिखते हैं। तो द क्वेश्चन सेज के that this is a decreasing function. Now you've already talked about everything about the sketch. You know that it splits at 1.5. 1.5 से पहले the values are going down and they go down to a minimum 1.75, right? So आप देख सकते हो कि उससे पहले 1.5 से पहले, let me just use another color, ये सारा decreasing है और 1.5 के बाद ये सारा increasing है। तो I'm going to use a positive color for the increasing one. सही है। तो बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आप स्केच को समझ रहे हैं बिकॉज इट इज सिमेट्रिक। इससे पीछे का जो कर्व है, सो यू कैन इजीली से कि अगर हम माइनस इन्फिनिटी से देखें तो 1.5 तक इट इज डिक्रीजिंग, एरो नीचे, एंड देन उसके बाद इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसको बोलते कैसे हैं कि दिस इज x लेस देन 1.5 या फिर x मोर देन 1.5। इस केस में बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर डिक्रीजिंग एंड वी नो दैट द डिक्रीजिंग इज बिहाइंड 1.5 बिकॉज इट्स अ स्माइलिंग। अच्छा, वाइस वर्सा यानी कि ऑपोजिट बात हो जाएगी अगर ये सैड फेस बनेगा, यानी जिसमें ए की वैल्यू पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव होगी तो सैड फेस बनेगा। तो सैड फेस या फिर फ्राउन में क्या होता है कि एच से पीछे इट इज इंक्रीजिंग और उसके आगे जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है। बस इसमें इतनी सी बात है, तो आपको सिर्फ लिख के देना है एक्स लेस देन 1.5। अब मैं यहाँ लेस देन इक्वल क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि इक्वल पे इट बिकम्स स्टेशनरी। ठीक है, सो ये यहां तक हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड। अब ये अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन है, उसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ, सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन y plus 2x is equals to k. Now we don't know k and they say कि okay this is the thing. Now there is a line जिसमें हमें k नहीं पता है, बट पार्ट 3 में k की वैल्यू बता देते हैं। कहते हैं for the value of 6. So if our line let's say is 2x equals 6 and the curve is the same, I'll just look at the curve again, x squared minus 3x plus 4. So if the curve is the same, x squared minus 3x plus 4, let me write that down, okay. So if it is the same, then we have to basically find out what are the intersection points. तो इसको हम simultaneously solve कर सकते हैं। ये equation 1 है, ये equation 2 है। You can use any of the two equations, make one of them become one variable, become a subject. So I'm looking at this y. मुझे ये y लग रहा है कि यार ज्यादा आसान है, तो मैं सोच रहा था कि इस y को choose another color, इस y को मैं subject बना लूं, right? So if you make y the subject, I just need a more darker color. Let me just change the color to a darker one. No, this is not this is the. So मैं इसको y को subject बनाने वाला हूं. So if I do that, use this equation. So I get y equals a 6 minus 2x. What I can do now, ये जो मेरे पास आ गया, इसको इधर substitute कर दूं, so I'll write down 6 minus 2x squared minus 3x plus 4. Now it's a simple quadratic equation. सब चीजों को one side shift करेंगे, ठीक है? Because x square जहां पॉजिटिव है, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि x square को पॉजिटिव रखें क्योंकि वो हाईएस्ट पावर है, बाकी सब जो भी हो जाए।
like terms को add and subtract करेंगे. So if we shift all of them to the right side, minus 2x become a positive, so minus 3 and positive 2. Let me write that down. And we already have a positive 4 and then we do minus 6. ठीक है, this is all equal 0. अब इसको सॉल्व करना है, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास निकल के आएगी, विच इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 2. ठीक है, यहां तक लिख लिया. अब बच्चे यहाँ पे पूछते हैं सर एग्जामिनर को क्या शो करना है मेथड, बिकॉज यहाँ हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं. मैं कहता हूँ ठीक है, कैलकुलेटर से डायरेक्टली आप आंसर लिख दो, दैट्स नॉट एन इशू, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिखा दो. किस तरह से? सो इफ यू कैन जस्ट एक्सट्रैक्ट आउट a is 1, b is -1, c is -2, just put these into the quadratic formula that we used to solve. अगर आप फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं लगाना चाहते तो इस तरह भी एक लेजी काइंड ऑफ अ सोल्यूशन कर सकते हो, इस पे पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे. सो -1 squared -4a and then c, and all of that getting divided by, let me just write it again, all of that getting divided by 2 times of 1. अच्छा, अब ये मैंने लिख दिया, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा फर्दर. ठीक है, मैं एग्जामिनर को इतना ही दिखाऊंगा कि जैसे मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल किया, बट आई एम नॉट एक्चुअली डूइंग इट. मैं क्या करूँ, मैं अपने कैलकुलेटर का इक्वेशन वाला फंक्शन मेन्यू, एंड देन इट इज राइट नेक्स्ट टू, दैट इज द ए ऑप्शन 9th के बराबर वाला. इस पे गए, सेकेंड पॉलिनोमियल पे चले गए, एंड देन यू प्रेस अगेन. Degree 2 means you're solving a quadratic equation. So we just put in or plug in the numbers that we have. We have a as 1, we have b as -1, and we have c as a -2. Okay? We press equal again, and then we have 2 and -1. So these are the two answers. And we are done with this solution. ठीक है? So देखो यहाँ पे हमें quadratic formula को पूरे को solve नहीं करना, सिर्फ दिखा देना है और कैलकुलेटर से आंसर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू द थर्ड पार्ट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. एंड देन इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व. ठीक है, अब पिछले वाले में क्या किया उसने, पिछले वाले में उसने खुद ही बोला कि k को 6 रखो, यानी कि वी डिड दैट, एंड कहानी वहीं से स्टार्ट हुई थी कि दिस वाज लाइक अ कर्व इक्वल्स अ लाइन थिंग. ठीक है, मैं अगेन वही चीज करने वाला हूं, बट दिस टाइम अराउंड वो हमसे कुछ और कह रहा है. मैं बताता हूँ, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था नेचर ऑफ द रूट्स के टाइम पे, कि आप अपने हिसाब से चीजें चेंज कर सकते हो. अब एग्जामिनर ने कहा कि मैं k की वैल्यू 6 नहीं रख पा रहा, तो वी आर गोइंग टू यूज द जनरल स्टेटमेंट वो जो इसने पार्ट 3 से पहले दी थी, एंड देन टू डिटेल टू पार्ट 4 के वो कह रहा है कि अब k की मुझे ऐसी वैल्यू निकाल के दो फॉर विच दिस लाइन बिकम्स अ टेंजेंट, राइट, फॉर विच दिस लाइन बिकम्स अ टेंजेंट. तो अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं आपको यहाँ हो क्या रहा है, तो अगर हम इन दोनों को उठाएं, दिस इज अ लाइन, दिस इज अ कर्व, राइट. अगर हम पुरानी चीज के ऊपर जाते हैं, लेट मी जस्ट राइट डाउन एज वेल, दिस वाज माय लाइन, एक मिनट, लाइन, एंड दिस वाज द कर्व, दिस इज द कर्व. ओके, सो यहाँ पे हमने किया क्या था, बेसिकली हमने कर्व को इक्वेट किया था लाइन से, एंड वी फाउंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जस्ट बिकॉज हमने k की वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन थी वो यूज की, एंड वी डिड नॉट नो कि 2 सॉल्यूशंस निकलने वाले या एक सॉल्यूशन या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आने वाले. तो दिस वाज समथिंग अ चॉइस बाय द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ने खुद ही हमें बोला कि बस ये करो. अब अगर मैं ये कहूं कि वी डोंट नो द k की वैल्यू, नाउ कंसिडर द k की वैल्यू एज सच कि व्हेन आई इक्वेट द कर्व टू द लाइन, लाइक दिस इज द लाइन, ठीक है, एंड दिस इज माय कर्व, जब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास जो है ना, line becomes a tangent. Tangent means we only have one solution. Like if we have a curve like this, so the line is as such that it just touches the curve at one point. So k की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है, यानी अगर मैं आपको ये चीज डेस्मोस पे ट्राई करके दिखाऊं ट्रायल एंड एरर के थ्रू के, लेट्स से कि आई एम ट्राइंग टू स्केच द लाइन. लाइन क्या, अगर मैं इफ आई मेक y the subject, so line equation is something going to be something -2x plus k, और मैं k की ऐसी वैल्यू रखना चाह रहा हूँ कि जिसके थ्रू ये लाइन जो है सिर्फ टच करे एक पॉइंट पे कर्व को, तो वो ट्रायल हो जाएगा, एंड ट्रायल वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो देयर इज अ क्विकर वे ऑफ डूइंग दिस. व्हाट यू डू, यू इक्वेट देम नॉर्मली. पहले आपने क्या किया, कर्व रख दिया, ठीक है, और फिर लाइन रख दी आपने इस तरह से. नाउ यू शिफ्ट एवरीथिंग टू वेयर द एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, सो आई शिफ्ट एवरीथिंग टू वन साइड. इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है, अभी तक मेरे साथ हो ना, समझ में आ रहा है. अब ये ऐसे लिख दिया आपने, ये ऐसे लिख दिया, और ये 4 - k. ओके, सो वी हैव दिस. अब नाउ व्हाट आर वी डूइंग, इसमें से हमने सिर्फ पिक कर लेना है a1, b -1 एंड c 4 - k. ठीक हो गया. जब ये सब हमारे पास होगा,
we just need to plug it into a condition called b square minus 4ac. डिस्क्रिमिनेंट को इस्तेमाल करेंगे और कौन सी वाली कंडीशन यूज करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल 0 रखेंगे. सो वी से 0 equals b 4a and c 4 minus k. Now we solve this to find out the value of k. Now you see, if I solve this, what do I get? I get minus 16 positive 4k. Then this becomes something negative 15. It goes over there, it becomes a positive 15, and this is 4k. So iske through जो solution मेरे पास finally निकलेगा, let me just write it down up here. तो मैं जो solution इसके through निकालूंगा, it would just be 15 over 4, right? And this is the value for the line, यानी कि अब ये मेरे पास वो value आ गई जो मैं यहाँ पे guess करने की कोशिश कर रहा था. तो the value that we've got is 15 over k, which is decimal में it is going to be 15 divided by 4. This is just going to give us 3.75. So if I would have guessed it, if I would have known that this was but it would have taken a lot of attempts for me to guess this value, where it becomes the tangent at this point, like the line becomes a tangent, and this special value of k is just one value. So that was it. That was this question, and we can now look into the second question. Okay. So the next question, as you can see, the next in line is really easy question. I call it like a quadratic equations, like a hidden quadratic equation, or we can say a quadratic equation in the stealth mode, जो छुपी हुई है उसको हमें निकालना पड़ेगा, because ये हमेशा से क्या होता है, let's write down the equation first and then we talk about it. X to the power 4, this is plus 1 over x squared, and that is equal to 4. So if I take the LCM now, it would just be, so we take always the higher power of the number, so it is x to the power 4. ये अब यहाँ पे अगर दोनों सेम वेरिएबल होते हैं तो हमें हायर पावर लेनी होती है एज एन एलसीएम. ये बेसिक है, आप इसको ऐसे ही याद कर लो, ठीक है. और इसकी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैड 1 over 4 एंड यू हैड अ y over 2, और मुझे अगर एलसीएम लेना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, आई एम गोइंग 4, क्योंकि वी हैव ऑलवेज सीन दिस दैट कि अगर मैं इसको भी 4 बनाना चाहता हूँ तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. सो इफ आई हैव अ 4, दिस विल जस्ट बी अ 1 एंड दिस विल बी अ 2y, राइट. तो दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस. सो ये 4 वाला कॉन्सेप्ट ही है, यानी कि अगर आप देखो तो 4 को मैंने लाइक व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट 4 and 2 over, सॉरी 4 and y over 2, तो मैंने 4 ही क्यों एलसीएम लिया, बिकॉज अगर आप देखो 4 इज बेसिकली अ फैक्टर ऑफ 2, सो मैंने इसको इस तरह देखा, एंड 2 के ऊपर भी पावर 1 है. सो अब हम एलसीएम जब लेते हैं तो सेम चीज की हायर पावर एलसीएम लेते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 2 स्क्वायर्ड, राइट. तो यही सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ वेरिएबल पे लगाना है कि अगर इफ यू हैव द सेम लेटर, सो यू हैव टू ऑलवेज पिक अप द हायर पावर फॉर द एलसीएम. ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं. दैट्स व्हाई आई एम पॉइंटिंग आउट कि भाई ये मत करना, ठीक है. तो दिस इज द वे. अब यहाँ पे क्या होगा, जस्ट बिकॉज इट इज एक्स स्क्वायर, आई नीड टू मल्टीप्लाई टू द एक्स स्क्वायर एंड द न्यूमरेटर एज वेल टू मेक इट एक्स टू द पावर 4. तो न्यूमरेटर में एक्स टू द पावर स्क्वायर्ड हमें नजर आएगा. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, लेट मी जस्ट टेल यू, आई एम जस्ट डूइंग दिस कि इसको भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये एक्स टू द पावर 4 जो हमें बनाना है वो बन जाएगा. ठीक है. अच्छा, ये करने के बाद अब आगे चलते हैं. सो व्हाट आर वी डूइंग now? We can actually simplify this, send this denominator to the other side. So what do we get? We get 18 x squared 4x to the power 4. ठीक है. Now shift everything to the right hand side. This will be 4x to the power 4 minus x squared minus 18, and this is all equal to 0. Now this is a quadratic equation, as you can see. जब भी ये मिडिल टर्म को देखो और जो स्टार्टिंग को देखो, ये हमेशा इस तरह से होता है जैसे अगर ये पावर 4 है तो ये 2 है, ये पावर 8 है तो ये 4 है, ये अगर पावर 16 है तो ये 8 है. इट विल ऑलवेज बी, इफ दिस इज n, इफ दिस इज 2n, so this is n. So you always have to pick up this pattern. तो ये क्वाड्रेटिक ही होता है. यहाँ पे हम छोटी सी एक assumption लगाएंगे कि हम x स्क्वायर को अगर a assume कर लें यहाँ पे, so the quadratic would look something like this. See, this would become a squared, this would be a, and this would be minus 18 equal to 0, right? कैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे x to the power 4 है तो it can be written x to the power square and square, and then we know
then we already know that we are calling x squared to be equals to a, so this would become a n squared, so that's why it is equals to an a squared. And what about x squared? X squared is directly an a. So that's why we have used this substitution to make it simple and look like a quadratic, and then we can just simply solve this. As I told you, you use a quadratic formula and don't solve it, just take out the answers from the calculator, write it. You will get full marks to solving a quadratic equation. Okay, so I'll just do that for you. So I have the calculator in front of me. I'll just press again equal, go to the option, press equals, press 2, 2, and then 4 minus 1 and minus 18, and press equal. So we have the first answer, which is 2.25. Let me write that down, that a is equals 2.25. Now we find the second answer to it, which is -2. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -2. ठीक है, यहाँ तक आ गए आप लोग. अब because we used the substitution that x squared was just equals in a, so a can now be replaced with an x squared again to get down to the real values. This is 2.25, and this is also x squared equals -2. We have to reject it just because we know that when I'm going to shift the square here, ये square root होके negative हो बनेगा, and this is no answer, so I'm going to reject it. Let me just write it with the red that I'm rejecting this, because it's going to be a complex solution जो हमने अभी नहीं करना. We'll be doing this thing in P3, तो हम तब पढ़ेंगे, and that will be the very first chapter, और ये मैं आपको करवाऊंगा एग्जाम से पहले इंशाल्लाह. अच्छा, अब ये स्क्वायर यहाँ से जब मैं शिफ्ट करूंगा, so whenever we shift square to the other side, make it a square root, you always have to write a plus and minus. ठीक है, ये by default इस तरह से होता है. So there will be two different values, the square root of positive and negative 2.25. So press 1 here and then do the square root and 2.25. So the answer that you get from that is a 1.5. So you have a negative 1.5 and a positive 1.5. Well, these are the two answers for this one, and we can now move on. I have also attached answers here just in case. I'll post this note in the video description, and then you can go to the note and see directly the written note as well if you want. Okay, so now we're going to move on to the next one. So let's go. Okay, so we are now on to our second question. Let me just check if we are recording. Yes, we are. So let's go back. Achha, now we are making, we are doing this question. This is from June 2014. So basically what we are doing is we are attempting all the topical past papers. The examples, whatever examples we're going to do, we are going to be doing from 2002 till 2014 or June 15, right? And then what I'm going to do is ये हम topical में से काम करें, right? We can even do after, once we are done with all of the completion of the P3, M1, S1 and P1 content, all of the 4 contents are covered. We can do yearly as well at the end of the thing, and yearly we can cover up from 2020 to the latest 2023. That's the plan. So that's what we're doing. So in these lectures, जो भी हम topicals cover करेंगे, वो इस bracket में से हैं, and जो भी आप yearly करना चाहते हो, वो इधर से हम, once we have completed the entire thing, then we can go for it. ठीक है? So let's just put it at a side here. Okay, and let's just talk about the question. So for this question, as you can see, for this question it is saying 2x squared minus 10x plus 8. We need to convert it into this form. Now this form is no other than the completed squared form, but as you know, okay, we have always done it through a shortcut, which I like myself as well. Or you can do comparing if you want. Like people do comparing because they're like comfortable doing it. What they do is just put it right in front, right? And then they say, okay, if these are identical, let me just open this up as well so that we can compare the left and the right. And then they write it like this, x squared, and then it is the expansion identity. So we then do 2bx like that, and then the last one is just p squared, and that's getting all multiplied with a. So yes, so we write this like this, and then you can multiply or spread a in it, and it's just a squared 2abx plus ab squared and plus c.
and then afterwards you can compare it to the left side, just like you compare x squared first, then you compare your x, and then you compare the constant. So well, you can do that, and I am not doing this approach right now. I was just telling you, if you want to do comparing, you can do comparing if you want, but there's a shortcut to it that I personally like the most, that we have covered in the completing square lecture as well. आप चाहो तो उधर से जाके वो देख सकते हो. तो शॉर्टकट से जो मैंने बताया था क्या होता था, शॉर्टकट देखो जब हम भी देख रहे हैं ना, शॉर्टकट से हम हमेशा चाह रहे होते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कर लें ये वाली फॉर्म में, ठीक है, हमारी वाली जो फॉर्म होती है, ये हमारी अपनी जो फॉर्म है, इसको वी कॉल इट द स्टैंडर्ड. ओके, सो वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड. और ये स्टैंडर्ड क्या होता है, लेटर ऑन जब आपका स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो, तीनों चीजें आप निकाल लो ए एच के, यू कैन देन कंपेयर इट टू दिस एंड यू कैन टेल व्हाट इज बी एंड सी. So it's basically the same. These two are the same. It's just that we work for our form first, and then we can, you know, put it equals to what's given in the question. So what do? We can easily see that the value of a is 2. Now we need to go for h. So for h, I need to see what my b is. B is, I can see. So I have two things, b, a and b. I can plug it into h equals minus b divided by 2a. So minus b divided by 2 times of 2. This would give me 10 divided by 4, right? इसको simplify कर सकते हैं. This becomes a 2. This is a 5. So this is a 2.5. Once you get this 2.5, you can put it back into the place of x to find out the k. Remember, h and k are the important points, important coordinates of the turning point. Turning point का ये basically x and y होता है. तो अगर आपको x पता लग गया तो you can put it back into the equation and get y from it. ठीक है, तो समझो मैंने ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर मैं ये रख देता हूँ x की जगह पे, और मुझे y का पता लग जाएगा. So I'll just compute it for you. So what is the equation? It is 2 bracket and 2.5 is squared, right? Minus 10 and then 2.5 and then we have a plus 8. So equals, this becomes a negative 4.5. Let's write down. So we just got the value of k, which is negative 4.5, and well, that's it. We have the thing. We can now write it as a is 2, x is just a negative, so we write x minus h, so we write h 2.5, and k is negative, so this is the thing. And now what? You can just, you know, once you have this form, you can always compare it to the thing that they have given you. So as you compare, you can see that the value of b from this comparison would be a negative 2.5 and c would be a negative 4.5, but this negative 2.5 is in no way showing the turning point. Turning point will always be according to the standard form, which is h and k. So if I talk about the turning point, turning point is 2.5, negative 4.5, but when you compare it to the form given, b is negative 2.5 in that. So this is how we basically do this thing, right? And as they are asking in the question, use your answer to state the minimum value of this. So what do I mean by minimum value of this expression? So this expression is actually a curve, a graph. So this is saying कि graph की minimum value क्या है, graph कहाँ तक जा रहा है. तो बहुत simple है यार, 2.5 के ऊपर minimum कहाँ तक जा रहा है. When we see कि 2.5 पे अगर मैं value निकाल रहा हूँ, तो 2.5 पे जो value आ रही है graph की minimum वो आ रही है negative 4.5. So I can easily say minimum value is a negative 4.5. Well, that's it. We can go to the second part of the question. So let's go. Okay, yeah, so I had to go back and start recording again. So yes, let me just. Okay, so we're now going to go to the second part of the question, which is this. It says, find the set of values of k for which the equation is given equals kx has no real roots. Now again, this is the same thing. See, 2x squared minus 10x minus 8 or plus 8 if I'm right, I'll make it right. So kx. Now this clearly looks like this is a curve and this is a line. How do I tell? I just look at the powers. जो powers होती है ना, उसको देख के पता लग जाता है. अब स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1 है, we don't show 1, so that means यहाँ पे पावर 1 है, तो इसका मतलब जो पावर 1 है वो लाइन होती है, लिनियर होती है. पावर 1 से बड़ी जो होती हैं, जो भी होती हैं, कोई भी पावर्स होती हैं 1 के अलावा, वो कर्व्स में वो कर्व ही होती हैं. So the question is asking कि if curve equals 9 and it has no roots, तो k की यानी कि we have to tell ऐसी values, हमें ऐसी values बतानी है k की कि when you look at this curve and when you draw the line that it doesn't touches the curve.
सो वही वाली बात है कि हम सबसे पहले सारी चीजों को एक तरफ शिफ्ट करेंगे. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी विद x. ऐसे लिख लो इसको x के साथ. यहां से आप निकाल लो a, b और c. अब ये सारा का सारा हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट द लाइन टू इंटरसेक्ट, सो वी से कि d को इस बार, d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज माइनस b स्क्वायर माइनस 4c. इसको हम चाहते हैं कि ये लेस देन 0, so we have to solve this inequality, and just because this is an inequality, that's why that the question said set of values बताओ in the first place. ठीक है, so let's just solve this thing. तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है. तो मैं जैसे ही यहाँ पे रखता हूँ b की जगह पे -10 माइनस k, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन होने वाला है. ऐसे लिखेंगे. अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, मैं यूजुअली ये करता हूँ कि -1 को बाहर निकाल लेता हूँ, इसको 10 प्लस k लिख लेता हूँ, and then I distribute this square on both the thing, like on the bracket and on this minus sign. And इसको अगर मैं simplify कर लूँ तो 4 8s 4 2s 8 8 8s 64. Let's write that down and we're going to do the next overall solution over here. So this is 10 plus k. -1 का स्क्वायर होके वो पॉजिटिव 1 बन जाएगा, लिखने की हमें जरूरत नहीं है. स्क्वायर ओपन करेंगे तो दिस वुड बी 100 प्लस, वी कैन कीप इट दैट वे आई गेस. इसको हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसको हम ऐसे ही रख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे ही रख सकते हैं. मैं बताता हूँ अभी क्यों. -64 एंड दिस वाज ऑल लेस देन 0. दिस वाज ऑल लेस देन 0. अच्छा, यहां पे अब आई वांट टू टेल यू समथिंग रिलेटेड टू द क्वाड्रेटिक्स इनइक्वालिटी. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में दो तरह की इनइक्वालिटीज होती हैं. अब जैसे आप देख रहे हो ये वाली, कि या तो कर्व इज लेस देन 0 या फिर कर्व इज मोर देन 0. सो जस्ट एज अ शॉर्टकट क्विक नोट, अगर आप लेस देन 0 सॉल्व करोगे तो याद रखना यही लेस देन का साइन दोनों तरफ कॉपी करो. x या k जो भी वेरिएबल है उसको लिखो, छोटी वैल्यू को इधर लिख लो, एंड द लार्जर वैल्यू वुड कम टू द राइट हैंड साइड. एंड इफ यू आर सॉल्विंग फॉर ग्रेटर, यही ग्रेटर साइन दोनों तरफ कॉपी करो, एंड स्मॉलर वैल्यू वुड कम टू द लेफ्ट एंड लार्जर वुड कम टू द राइट. ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सबसे शॉर्टेस्ट नोट ऑन द इंटरनेट दैट यू विल एवर फाइंड आउट इज दिस. ओके, so what you can do, you can just simply do this or do this when you're solving a quadratic inequality. In our case, it's a less than. So let's simplify first. You can completely forget about the inequality sign and solve just to find the critical values. Just like मैं यहाँ पे inequality sign भूल के सिर्फ critical values निकालने लग गया हूँ. ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, I'll write down, I'll basically shift 64 to the right. So this is this, and now I can do the square root on it, so it would be a plus and -8. Now you can easily see, अगर अब मैं इसको simplify करता हूँ, I will have to do with a 10 plus k equals in it, and I will have to do a 10 plus k a -8. So these are the two possibilities which would give me two answers, which is k equals a -2, and the other one would be a k equals a -18, right? Well, I told you we write the smaller to the left and larger to the, this one is the smaller, this one is the larger. So the final answer would come in this pattern just because this was curve less than 0. So the final answer, let me write that down. Okay, I'm sorry I haven't been writing behind the thing. So I'll just zoom out a little bit or maybe move it over here. Now you can see. So these are the two, and I'm saying like this is a larger and this is a smaller. And we are saying that the answer would come in this pattern. So we write down that the inequality has the answers as -18 and a -2. ठीक है, these are our final answers. Remember the inequality was d less than 0. Where is d? Where is d? So we started with this. If you don't want to have the real roots as the question said, so you have to put d less than 0. And the solution to that is this. So this is our final answer. ठीक हो गया. कैसे स्टार्ट किया था हम लोगों ने, कर्व इक्वल लाइन इक्वेट किया, सबको एक तरफ शिफ्ट किया, एबीसी पिक किया, एबीसी को हमने डिस्क्रिमिनेंट में लगाया इनइक्वालिटी की कंडीशन में, एंड देन वी जस्ट सॉल्व्ड इट, एंड दिस इज द आंसर टू इट. ओके, वेल दिस वाज इट, एंड आई गेस वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स गो. ऑलराइट एवरीवन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों सेलेक्ट किया मैं बताता हूँ. ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो इसका सेकंड पार्ट है इसकी वजह से किया. आई लाइक द सेकंड पार्ट, so that's why I want to share it with you. And alhamdulillah we have covered all the variety that can come into
क्वाड्रेटिक्स। अब क्वाड्रेटिक्स और भी बहुत सारे टॉपिक्स के साथ मिक्स होके आता है, जैसे डिफरेंशिएशन इसके साथ मर्ज हो जाता है, फंक्शन इसके साथ मर्ज हो जाता है, बट आई हैव केप्ट इट सिंपली कि अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक्स के ऊपर ही प्योरली क्वेश्चन होगा तो क्या क्या वो पूछ सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताना अगर आप लोगों को और कोई क्वेश्चन you need the solution of, you can type the reference to it and maybe we can make a video later on to supplement it. Right now we are doing a challenge to complete all the 4 contents in 30 days. We are right now in P1. I'll be doing more videos to the different playlists. मैं चाह रहा हूँ कि अलग playlists बना दूँ सबकी, जैसे P1 की अलग, S1 की अलग, P3 की अलग, M1 की अलग, so that if you have to prepare for the exam you just open up that playlist and it will go in sequence and you are prepared. ठीक है। I'm calling it 30 days just because I am challenging myself to complete it all in 30 days. Otherwise, like if you have more appetite and you want to do it more quicker, आप जल्दी देके 1-2 हफ्ते में भी खत्म कर सकते हो एक कंटेंट को. It doesn't matter. It just depends on where you stand in your preparation. ठीक है, तो चलो बात लंबी हो जाएगी, इसको कंप्लीट करते हैं. So what do we have? Again, for the first part, the question is saying, very simply the question says, this is the question says that convert the expression into the form. Okay, what is fx? So fx, you can see it's a little functions kind of question, but you can always change this fx to a y because that is what it is. So it's written in this way or it's written this way. So this is called f is such that 2x squared and this is called f of x. So well, y equals the same thing. So they all are representing the same thing. Take this expression. So they say that this expression is from 0 to a and a is a constant. We don't know, we'll find out later. So the equation, let's write it down, 2x squared minus 12x plus 13. Now you need to convert it into the form. Well, we have already done that. I'm just going to quickly do this for you. b is just going to be negative 12. Put this into the thing that I told you in this. So this is going to be x coordinate of the turning point. निकाल लेते हैं, क्या बन रहा है, minus 12 divided by 2 times of 2. So minus becomes a plus. This is 12 divided by a 4. We get a 3, right? You can put this back into the expression to get the y coordinate. यहाँ पे 3 को रखेंगे तो हमारे पास इसका y coordinate यानी कि k भी आ जाएगा. So let's compute. So we have a 2 and then we have a 3 and to the power of 3. ये मैं आप लोगों को सब करके इसलिए बता रहा हूँ because we are doing the past paper practice together. वैसे तो ये हम कर चुके हैं, so it's redundant but it's okay. It gives you more practice, so it's fine. So k becomes a negative 5. So we have the points we need. We have a, we have h, we have k. So what is the format looks like? I told you whenever it gives you this kind of a format, this whole thing squared, just remember that we are first going to convert it into our standard and then we can compare it to any form that they have given in the question. ठीक है? So that will, save time. So this is 2 x minus 3 whole thing squared and minus 5. Now, if I write what was the form given in the question, it was this form. They said ax plus b whole thing squared plus c. So you can easily compare that this thing is actually equals to this. So minus 3 equals b. So b is actually turned out equal to minus 3. And then you can see that this c is also equals a negative 5. बस ये हो गया. And that's it. We're done for this part. Let's go to the next part. इसमें तो हमें सिर्फ ये convert करना था. हाँ. So the next part is my favorite because इसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं है. इसमें you just tell कि भाई एक ही. अभी if you remember what was happening, the question said at the start. Question said that this function, whatever this is from 0 to a, right? And then they say in the second part, state the value of this a, like this domain, like where the screen ends, like it starts from 0 and goes till a. So what is the value of a for which the function has a line of symmetry? So if something has a line of symmetry, देखो मेरी बात सुनो, अगर if you want something to have a line of symmetry, especially ये जो quadratic होता है ना, let me just write the equation again. 2x squared minus 12x plus 13. So we have 2x squared minus 12x plus 13. I'm just really bad at remembering the equation, so I'll go again and take a look at it. Yes, it is this. तो अब इस equation का अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था? We found out that h was 3, like the graph becomes symmetrical at 3. So if it is starting at 0, ठीक है? Let's say start at 0. I know that there's a turning point at 3. And if I want a to become, I want the value of a such that the
that the value of a for with the graph, they say that okay, whatever this becomes, it should have the symmetry. यार अगर किसी को भी symmetry बनाना है तो जितना distance to the left होगा उतना ही to the right होना चाहिए, right? अब ये तो हमें पता है कि this is starting from 0 so it goes till 3. So 3 से आगे a तक कहाँ ले जाना है ये हमारी choice है, तो अब उसको आगे हम उतना ही ले जाएंगे ताकि symmetry बने. So 3 units 3 से आगे बढ़ेंगे तो this becomes a 6. So a is just a 6. Well, that is all for the past papers of the quadratics. Video थोड़ी लंबी हो गई, but I just wanted to give you some variety, some flavor to how the quadratics के question will be. Now you're all set for the practice of more past papers. If you want to do from the latest papers, what you can do is you can go from 2022 or 2023 for the preparation right now. कि आप इसके सारे के सारे वेरिएंट्स और आपके जो लोकल वेरिएंट्स है, पहले लोकल वेरिएंट्स अटेम्प्ट कर लो, फिर जो अदर वेरिएंट्स है जो हमारा लोकल पेपर नहीं होता, जो कि पेपर 1 एंड पेपर 1-3, वो जाके अटेम्प्ट कर सकते हो. उससे यू विल हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस एंड यू कैन स्कोर अ वेरी नाइस डिसेंट ग्रेड, and you can even score an A static, depends on your confidence, because confidence is the key to performing the exam. Well, that is all for this video. Thank you so much, and in the next we will be starting up with the functions. Thank you. Allah Hafiz.